Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Contemporary South Asia under the book Contemporary World Politics. And in this chapter we were discussing about the domestic politics of Pakistan, and we have seen that Pakistan was primarily a military ruled country up to the year 2008. First of all, Ayub Khan became the head of the country, military head of the country. Then Yahya Khan came to power, and in this rule of Yahya Khan, there was war of 1971 with India and Pakistan, and this war caused the emergence of Bangladesh. And after this war, it was defeat of Pakistan in this war. The Pakistan was defeated, and it had impact on its domestic politics also, because after that we see there started democratic process, and an elected government came to power from 1971 to 1977. The elected government was there under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto, who was a popular leader, and the government was democratic. Then again we see in the year 1977, the government of Bhutto was removed by General Ziaur Rahman and Ziaul Haq, not Ziaur Rahman, it was General Ziaul Haq. उन्होंने भुट्टो को हटा रिमूव करके अपना पावर ले आया in the year 1977, and he remained in office till 1988. And then what happened again in Pakistan, democratic process started, and there was election in 1988, and an elected democratic government came to power under the leadership of Benazir Bhutto, who was the daughter of Zulfikar Ali Bhutto. तो बेनज़ीर भुट्टो के लीडरशिप में 1988 में फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है, बट इट वाज आल्सो नॉट लॉन्ग लिव्ड, बिकॉज in the year 1999 there was military takeover of the power, and General Pervez Musharraf becomes the head of the country, who was the military head. And then we see after becoming head of the country, he conducted election in the year 2002, and this election was conducted only to show the whole world that the government is democratic. The government has the mandate of the people. So this military rule lasted till 2008. And we see there was election in the year 2008, and this election, after this election, the government was formed, which lasted for 5 years. It completed its term. That was the greatest achievement for the people of Pakistan, we can say, because it was a democratically elected government, and for the first time in the history of Pakistan, that a government was a democratically elected government was able to complete its 5 years term without any obstruction. And after that, again elections held in the year 2013, then again elections held in the year 2018, and at present in Pakistan there is a democratically elected government under the prime ministership of Imran Khan, who belongs to the party Pakistan Tehreek-e-Pakistan party. Okay, Tehreek-e-Insaf. It's Pakistan Tehreek-e-Insaf party, PTI. Okay, and now we can hope that Pakistan will remain a democratic country. So after 2008, we can see that the country is moving towards the goal of democracy. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेबल हो रही है. इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. एंड now we in the previous class we have started discussion regarding reasons why Pakistan
has failed in building a stable democracy, why there is military rule. Every now and then Pakistan is under the military rule. What is the reason? What are the factors which are contributing towards दिस डेवलपमेंट कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं हो पाती है, और जब न तब हम देखते हैं कि मिलिट्री जो है वो वहाँ पर रूल पावर में आ जाती है. आखिर क्या रीजंस है? सो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट रीजन. द फर्स्ट रीजन इज सोशल डोमिनेंस ऑफ क्लर्जी, मिलिट्री एंड land owning aristocracy. So what we find in the society of democracy, there is a dominance of the clergy, the people, who was the leaders, religious leaders. Clergy is the people who are related to religion, and they are holding a type of elite. They are considered as elite in society. Elite means जो common people से जो जिनको ऊपर माना जाता है, they are called elite. तो इस तरह का क्लर्जी जो है उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की सोसाइटी में. देन वी सी कि मिलिट्री इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मिलिट्री इज़ ऑल्सो इन सोसाइटी, मिलिट्री इज़ गिवन हाई रिस्पेक्ट, एंड अदर देन दिस देयर इज़ अ लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी. तो इनका जो डोमिनेंस है गवर्नमेंट सोसाइटी पे, दैट डोमिनेंस इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान. बिकॉज ये जो क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस क्लर्जी, मिलिट्री एंड लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, their interest will be better served in a military rule, not in a democratic rule. So we see many times it happens कि जो भी democratically elected government है, that is overthrown and military rule is established in Pakistan. And then second reason is there is conflict with India. We know we have a very bad relationship with Pakistan. We have engaged in a war with Pakistan, 3 full-fledged wars. Then Kargil war was also there. That is also considered as a war between the two countries. So we can say कि with India there was 4 times we were engaged in war. So in this situation, what we find कि the leaders there in Pakistan, especially the military leaders, they are of the opinion that in this background of bad relationship with India, Pakistan should never go for democratic government, because democracy is a government of the people. In democracy, what is the most important thing? That is vote. Democracy is based on elections, and elections are based on votes. So vote politics is very much part of democracy. We cannot deny this. And the military leaders are of the opinion that if Pakistan goes for this democratic rule, or in such a rule in which political parties becomes most powerful, or they are becoming the most important tool for the formation of the government, in that situation the security of the country can be compromised. क्योंकि जब हम वोट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इन ऑर्डर टू गेन वोट पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान है उसकी सिक्योरिटी को एक खतरा हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज़. तो दे डोंट वांट कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बने, वहाँ पर वोट पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें हों, क्योंकि अगर वोट पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस मिलेगी तो फिर कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज tendency of the political party to gain more and more support of the people. तो सपोर्ट गेन करने के लिए वो सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर सकते हैं, और इन पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो द मिलिट्री रूलर्स दे आर ऑफ द ओपिनियन कि द सिक्योरिटी जो है वो तभी हमारी मेंटेन हो सकती है जबकि मिलिट्री रूल होगा. सो दिस इज अनदर रीज़न, एंड नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड रीज़न व्हाई देयर इज support for military rule. Okay,
And in this, we will see the Western countries, or the US. The US and Western countries, they are also playing a role in the internal politics of Pakistan. And what is this role? What is this role? क्या role वो play कर रहे हैं? Because we all know that in Pakistan there is problem of terrorism. We can say कि कुछ ऐसे situations हुए जिसमें कि पाकिस्तान में terrorism को promote किया गया. We all know that Pakistan helped terrorists in financial way. Then they provide training also for the terrorists. So it's a known fact that Pakistan में terrorism को फॉस्टर किया जाता है, प्रमोट किया जाता है. और हालांकि ये अलग बात है कि nowadays we are seeing कि Pakistan itself is becoming the victim of terrorism. That is another thing. Here we are concerned only with this global Islamic terrorism. There is a global Islamic terrorism, and Pakistan is one of the most important centers of this global Islamic terrorism. And the Western countries, especially the US, is of the opinion that on the one hand, just wait a moment. On the one hand, what we are seeing that the Pakistan is one of the most important center of global Islamic terrorism. On the other hand, what we see, Pakistan is a nuclear country. Unofficially, Pakistan is a nuclear country. Pakistan has developed nuclear weapon, and it is also known fact. Everyone, the whole world is knowing that Pakistan is having nuclear bomb. So in this situation, there is fear in the mind of the US and other Western countries if in Pakistan the terrorist must be in control. क्योंकि अगर टेररिस्ट को कंट्रोल में नहीं रखा गया विद इन पाकिस्तान, तो इन दैट सिचुएशन इट मे हैपन कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उस पर वो टेररिस्ट ग्रुप का कंट्रोल हो जाए. और अगर इफ the nuclear arsenal of the country comes in the control of terrorist group, then the security of the whole world will be in danger. So there is need to control this terrorist group, and it is the opinion of the Western countries that these terrorist group can be controlled only they can be controlled efficiently only under the military rule. क्योंकि जब मिलिट्री रूल होगा तभी इन टेररिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल किया जा सकता है. डेमोक्रेटिक रूल में उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज डेमोक्रेसी एक अलग तरह का रूल है, मिलिट्री रूल अलग तरह का होता है. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन. ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे ऑल्सो सपोर्ट मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान बिकॉज दे हैव द फियर दैट दिस कंट्री विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म can in this country the terrorist group can control the nuclear arsenal of the country under the democratic rule. तो वो चाहते हैं कि मिलिट्री रूल हो ताकि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जा सके. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन for military rule in Pakistan. Why we see so many times the democratically elected government is overthrown and a military regime is established in democracy. These are the reasons. So I am writing down the third reason. The third point is US and other Western countries US and other Western countries support military's rule
in Pakistan so that the terrorist groups can be kept in control. So these are the three important reasons for which we see that in Pakistan military rule जो है वो उसको support मिलता है. In Pakistan there is support for military rule, and but in conclusion we must be aware that from the year 2008 now it's 12 years. And in these 12 years, in this span of 12 years, we see that elections were held there 3 times. And the government is formed, and the government has completed the term of 5 years. That is a very positive sign. And we can say that it's good for democracy. And we hope that in future Pakistan will remain a democratic country. So this is all about Pakistan. Whatever we have to study about the domestic politics of Pakistan, this is all. Now the next country about which we are going to study is Bangladesh, which is very much related to Pakistan and India also. So we will switch to Bangladesh. Bangladesh, the part of the world, the region of the world which is called Bangladesh today, actually it was a part of India at one point of time. After independence, what happened that India got divided. There was 2 countries were made out of India. One was India, one remained India, and the another was Pakistan. And this what we find that how this partition was done, what was the process of partition. In India there was a Muslim population was there, and this division was done on the basis of religion only, because it was the concept of Muhammad Ali Jinnah two nation theory, because that two people belonging to 2 different religions cannot live in a single country. तो ये जो रिलीजियस बेसिस पे जिस कंट्री का फॉर्मेशन हुआ, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो भी मुस्लिम्स हैं उनका पाकिस्तान होगा और हिंदूज का इंडिया होगा. बट इन आवर कंट्री ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी दैट वाज नॉट कंसंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर रीजन ओनली. 2 मेन कंसंट्रेशन थे मुस्लिम पॉपुलेशन की. एक जो हमारे इंडिया के वेस्ट में पड़ता था, जो कि जिसको हम अभी पाकिस्तान कहते हैं, एंड दूसरा जो था वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में था, जिसको कि अभी हम बांग्लादेश कहते हैं. तो ये समझ में आया कि पाकिस्तान जो है वो 2 पार्ट में होगा, एक वेस्ट और एक ईस्ट, और उसके बीच में इंडिया का पोर्शन होगा. इट वाज डिसाइडेड कि इसी तरह से पाकिस्तान बनेगा. तो पाकिस्तान के 2 पार्ट हुए, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान. एंड नाउ व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान कि वहाँ पर ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इनके कल्चर में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है. देयर इज डिफरेंस इन कल्चर, इन लैंग्वेज. ओके, तो व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान कि देयर वाज एन एफर्ट टू डोमिनेट द ईस्टर्न पाकिस्तान. जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान को डोमिनेट किया. ईस्टर्न पाकिस्तान का लैंग्वेज, बंगाली कल्चर, उसको क्रश किया गया, सप्रेस किया गया, एंड वहाँ पर इम्पोज किया गया उर्दू लैंग्वेज को. जो वेस्टर्न पाकिस्तान की कल्चर है उसको इम्पोज किया गया.
तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ जब एक कंट्री के अंदर होगी तो उसका प्रोटेस्ट होगा, because when culture is suppressed, then there is it is bound to be reacted. People will react. So that happened in eastern Pakistan also. People started their resentment, started to sow their resentment against the western Pakistan government. Not only this, there was economic exploitation also. The western eastern Pakistan was economically started to be economically exploited by the western Pakistan. So the resources of eastern Pakistan was used for the development of western Pakistan. तो ये एक तरह की जो डिस्पैरिटी थी दोनों रीजन में, वो नज़र आने लगी, एक्सप्लॉयटेशन समझ में आने लगा, और वहाँ पर जो लोग थे उनकी तरफ से जिसको हम कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया. And in this all these public protests, what was the demand of the people? The people were demanding that there should be fair representation in administration. They were not given fair representation in administration. They were not given share in political power. मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान की कंडीशन उस समय थी, एक टाइप ऑफ कॉलोनी, इट वाज यूज्ड बाय द वेस्टर्न पाकिस्तान एज अ कॉलोनी. जैसे कॉलोनी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन होती है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होती है कॉलोनी की. देन अदर देन दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वी हैव एक्सपीरियंस्ड द कॉलोनियल रूल. क्या क्या होता है, वी ऑल नो कि किस तरह से पावर में शेयरिंग नहीं दी जाती है, उनको कंसिडर किया जाता है कि दे विल बी रूल्ड बाय समवन एल्स. तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही थी. वेस्टर्न पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान को अपना कॉलोनी की तरह से यूज़ कर रहा था. तो people started protesting against this, and their demand was that they must be given fair share in administration and fair share in political power. And in all these protests, what we find, a new leader emerged in Bangladesh, and the name of this leader was Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Mujibur Rahman was the leader of the people and their protest against the dominance of Western Pakistan. And it was the demand of Sheikh Mujibur Rahman that the eastern part of the country, the eastern Pakistan, must be given autonomy. Okay, they wanted to improve the situation of eastern Pakistan, and in order to improve the situation, they were of the opinion that this region of the country must be given autonomy. And they were also demanding कि जो फेडरलिज्म है उसको वहाँ पर अडॉप्ट किया जाए कंट्री में, मतलब पाकिस्तान को एक ट्रूली फेडरल कंट्री बनाया जाए, और इस फेडरलिज्म के अंदर जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसको ऑटोनॉमी दी जाए. So it was demanded by Sheikh Mujibur Rahman, and in the year 1970 there was election in Pakistan. पूरे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन हुआ 1970 में. और इस इलेक्शन में क्या हुआ कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग. This Awami League is still existing in बांग्लादेश. आज भी बांग्लादेश में ये अवामी लीग इज वेरी मच एक्टिव इन पॉलिटिक्स, एंड ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. तो इनकी पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग. And what happened in the election of 1970, that this Awami League won all the seats in East Pakistan. East Pakistan की जितने भी सीट्स थे वो सब इसी अवामी लीग ने जीत लिया. And there was a proposal for the formation of constituent assembly, because जो फेडरलिज्म की मांग की जा रही थी, ऑटोनॉमी की मांग की जा रही थी, उसके लिए ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा एंड देन इट विल बी डन. अब हुआ क्या, ये जो इलेक्शन हुए 1970 के, इस इलेक्शन का जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि जो
प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कि बनने वाली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होने वाली थी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेजॉरिटी हो गई वो किसकी हो गई, वो अवामी लीग की हो गई। सो जस्ट व्हाट विल बी द सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर फॉर्म हो जाती, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम देख रहे हैं कि अवामी लीग हैज सिक्योर्ड मेजॉरिटी, तो व्हाट कुड हैव हैपेंड कि जो भी नए प्रोविजंस आते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी प्रोविजंस रखे जाते, वो सब अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द अवामी लीग होता ना, क्योंकि उसको मेजॉरिटी मिल गई थी। तो अब ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में अरोज किया कि वो तैयार तो हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उसके लिए इलेक्शंस भी होते हैं 1970 में, लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट था दैट वाज वेरी मच डिस्टर्बिंग फॉर द लीडर्स ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान, क्योंकि रिजल्ट जो था उसमें अवामी लीग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी मिल गई थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उसने असेंबली को कन्वीन करना ही कैंसिल कर दिया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होगी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ही नहीं, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, बिकॉज दे नो कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो वहाँ पे फिर अवामी लीग का ही चलेगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो ये डिसीजन जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, और जो गवर्नमेंट थी वो वेस्ट डोमिनेटेड थी एट दैट टाइम, है ना। तो जो वेस्ट डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उसने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग को कन्वीन नहीं किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो डिसीजन हुआ, इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया, और जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया तो उसका कंसिक्वेंस हुआ। कंसिक्वेंस क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड देयर प्रोटेस्ट, उनका जो प्रोटेस्ट था उसका लेवल और भी बढ़ गया, बिकॉज एक तरफ तो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये रिफ्यूज़ कर दिया कि वो बैठेगी नहीं, उसकी मीटिंग नहीं होनी है, एंड ऑन द अदर हैंड देयर लीडर शेख मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड। तो ये इन चीज़ों के कारण जो लोगों का रिजेंटमेंट था वो बढ़ जाता है, बट जिधर एक तरफ अगर रिजेंटमेंट बढ़ता है तो दूसरी तरफ उसका सप्रेशन भी बढ़ता है। इट्स अ साइकिल, ये इसी तरह से चलता है। जब लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ता है तो गवर्नमेंट का सप्रेशन बढ़ता है। तो वही हुआ उस समय पाकिस्तान में याहिया खान का रूल था। याहिया खान वाज मिलिट्री हेड, जैसा कि अभी हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पाकिस्तान। तो याहिया खान ने बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया, करने का ऑर्डर दिया इसको पाकिस्तान आर्मी को कि जो कुछ भी बांग्लादेश में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, और थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। तो ये जो कुछ हो रहा था ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, ये जिस तरह से लोगों की किलिंग हो रही थी, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे स्टार्ट हुआ। एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट? पीपल स्टार्टेड टू फ्ली देयर कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़ करके, भाग करके वो अपने नेबरिंग कंट्री, जो कि उनका नेबरिंग कंट्री इंडिया था, वहाँ भाग करके वो आना शुरू कर दिए, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग रेफ्यूजी इन इंडिया। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा था वो बहुत ही लार्ज स्केल का माइग्रेशन था, और बहुत हजारों के नंबर में जो पीपल थे दे स्टार्टेड टू कम टू इंडिया। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि कैसे इस रेफ्यूजी जो आ रहे हैं इनको मैनेज किया जाए, बिकॉज इतने सारे लोग अचानक से अगर आएंगे तो कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो वो कंट्री, हमारी कंट्री वाज फेसिंग दैट प्रॉब्लम एट दैट टाइम, एंड this problem of refugee caused that India must intervene. India must interfere in this matter of Pakistan. Pakistan, जिसको obviously it was internal affair of Pakistan, but because of internal affair of Pakistan, India was getting affected. India, so many people were coming to India as refugee from ईस्टर्न पाकिस्तान। तो आपके इंटरनल मैटर के कारण हम बहुत बुरी तरह अगर अफेक्टेड होंगे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इंटरवीन, और वही हुआ।
अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, यू हैव स्टडीड दिस इन बुक 2, कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाते हुए उन्होंने वॉर स्टार्ट किया पाकिस्तान के साथ 1971 का, और इंडिया ने इस बात को सपोर्ट किया कि ईस्ट पाकिस्तान जो है उसको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, जो कि अभी तक जो हमने देखा कि 1970 का जो इलेक्शन हुआ उस समय तक पीपल वर डिमांडिंग ऑटोनॉमी विद इन द कंट्री, बट जब सप्रेशन शुरू हो जाता है, इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और लोगों के प्रोटेस्ट को ब्रूटली क्रश किया जाता है, तो फिर वहाँ पर जो लोग हैं दे स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंस, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। अब उनको ये नहीं था कि वो ऑटोनॉमी चाहते थे, दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और India started to support this demand of the people of Bangladesh, and this caused the war of 1971. We will discuss this in the next class.